Yeah, Tarika, we can start now. Okay, sir. Monica ma'am, please. Sure. Good morning, everyone. I, Dr. Monica, welcome you all to today's webinar on awareness of SWAYAM portal of e-learning among students. As you all know, that e-learning has shown a significant growth over the last decade, as the internet and the education has combined to provide people with the opportunity to gain new skills. In this webinar, we will discuss that how SWAYAM as a platform is helping us to work on the three cardinal principles of education policy, that is equity, quality, and the access. And from this webinar, we'll also let to know that students will come to know more about SWAYAM courses offered and how they are going to benefit them. So I would request Tarika Singh for the welcome address. Please, ma'am. Thank you, Monica ma'am. Hello and welcome everyone, and thank you for your overwhelming response in joining us for today's webinar. And as you all know, I'm Dr. Tarika Singh. I'm professor at Prestige Institute of Management, Gwalior. And Prestige Institute of Management is an autonomous UGC NEC accredited A-grade institute, and our MBA course is accredited by NBA. See, the topic for today's webinar, as you all are aware, is on the awareness of SWAYAM portal of e-learning among students, and the resource person is Dr. Vishal Kumar. He is the Director, School of Management at Maharaja Agrasen University, Baddi, Himachal Pradesh. Dear students, as we all understand the importance of ICT in our day-to-day lives and the ways in which they are transforming the world, if it was not clear earlier, it is bindingly obvious now in terms of time that is we are facing is COVID-19 pandemic. So the webinar today will highlight and generate the awareness on the key features, benefits, and the use of SWAYAM in a wider perspective, particularly to provide education to a large mass of students cutting across the geographical boundary. SWAYAM platform today is the present need for the alternative education. I advise students to take benefit of the MOOCs available in the SWAYAM platform, and this webinar will generate awareness in you. I will request all of you to keep yourself muted during the session and also keep your video off. If you have any query or the question for this host, you can type in the chat box and your questions will be taken at the end of the webinar. And make sure you bring all your doubts, questions about the program so that they can be discussed. Students, I believe that by participating in this webinar, you are in the right place and right time. Together, let us accelerate the exchange of ideas and scaling up of MOOCs through SWAYAM. I wish you all a very successful webinar. Thank you, everyone. Over to you, Monica ma'am. Thank you so much, ma'am. So now I would like to introduce our esteemed resource person, Professor Dr. Vishal Kumar, Dean Research and Director, School of Management at Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, India. He has 23 years of teaching experience as Faculty of Commerce and Management with the specialization of Finance, Accounting, Banking, and Entrepreneurship. He is a prolific writer and has authored around 24 textbooks and 5 edited books. He has published 54 research papers in various journals of repute as well as presented 43 research papers in national and international conferences. He has been invited 55 times as resource person, keynote speaker in the technical sessions of various conferences and workshops. He has visited UAE, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand, and many more places to participate in various international conferences. Professor Vishal is not only a good academician but also a vibrant researcher, innovative professional, and a creative thinker. He played a key role in writing Vision 2020, a vision document of Maharaja Agrasen University in 2014 and 15. He has completed many projects as the coordinator and co-coordinator assigned by UGC and MHRD. He is a MHRD approved MOOC instructor and offering the course organization behavior on SWAYAM platform for the last 3 years. Himachal Pradesh Commerce and Management Association conferred Dr. Vishal Kumar HPCMA Young Researcher Award in 2016 for his outstanding research contribution. 3 scholars have completed PhD under his guidance, and 8 scholars are pursuing their doctoral research under his worthy supervision. Now, I will request Sir to enlighten the gathering from his wonderful thoughts on this topic. Over to you, sir. Uh,
Thank you very much, ma'am, for your kind words. A very good morning to one and all. At the very outset, I want to thank organizers of this webinar, especially Dr. Tarika Singh, Professor Management, Prestige Institute of Management and Research, Gwalior, and also congratulate the whole organizing team for taking this initiative and providing a platform to all the learners who want to stay updated in the times of this COVID-19 pandemic. So I believe that this is an opportunity in disguise for all of us, right? So today's session is designed for students and faculty, which will help them to learn how to select and join MOOC courses and also throw light on various e-learning tools. So it is important to stay up to date with the technology because we have seen a noticeable increase in the interest of students towards e-learning for the last 1 year, right? So rather, I would say it is the need of the hour now. So this will be an interactive session. Before starting the session, I request to all of you to be active during the session and give your inputs whenever I'll ask. And time to time, I will be sharing with you some, links in your chat box, and you will have to give me your responses in the form of a written statement or polling. Fine. So I will be using various digital tools, and at the end of the session, I'll try to, give you also some, kind of, uh, special. I'll try to highlight some of the special features of these interactive tools. So, okay, let's kickstart the session. I'm going to share my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes, it is visible. Okay. So today's session is designed on the very beautiful topic, the impact of e-learning on education, awareness about SWAYAM and other e-learning portals. So the session is focused on, first of all, I would like to discuss about, the scenario of the changing trends in education. Then we will discuss the difference between traditional learning system versus e-learning. Then we will be discussing about the shifts in focus of the students as well as the faculty. Then we will have the discussions about MOOCs and SWAYAM. And last but not the least, we will try to have some hands-on practice on various e-learning productivity tools, right? So before moving further, I'll start, this session from the teacher's perspective. Then I'll, be switching over to students' perspective. The easiest way to, answer to the question as to what the teacher should know about the world is everything, right? So teachers are expected to impart skills to students like a great communicator, applying critical thinking, knowing how to collaborate with diverse people, and being creative, right? So the students expect their teachers to be their friend, sometime philosopher, guide, parent, and facilitator also. So he or she has to be a continuous learner and an excellent listener. Fine. The more he or she listens, the more he learns. And the more he learns, then the more he teaches.
So that's why it is said that the teachers are lifelong learners, and their learning is the real meaning of the learning from cradle to grave. So, what do you think? Being a teacher is easy? It is not that easy because the expectations of students nowadays, especially during this COVID-19 pandemic, are enormous, right? So, being a teacher is definitely not so easy. So you can see from this picture what are the expectations of the students nowadays from the teacher, right? So first one is solid foundation of the knowledge. Everybody is expecting from the teacher that they must have, the full. They must have the knowledge of computers as well as the knowledge of the subject, and they must be, they must know each and everything. So the students are also expecting the teacher should have the 360-degree eyesight who can see positives before negatives. They used to ask us when the colleges will be open, when this pandemic will be over, very, small questions they ask us, right? Teacher should have the x-ray vision. He or she must have the good sense of humor. हम उनको बोर नहीं कर सकते क्लास में. We must, during the lecture also, in order to create the ambience in the classroom, we must have the sense of humor. Teacher must be the, playing the role of helping hand, encouraging. He or she must be, gold hearted. Strong moral values we must possess, and we must have the, musical fingers. Musical fingers means that, whenever the students are getting bored in the class, we can, play the various instruments, right? So script writer nowadays, it is the need of the hour because a teacher, has to be a very good script writer also. We must have the, potential of creating an attractive e-content. Good communication skills. We must have the noise filter ears, computer master, memory of an elephant, and galaxy of the bright ideas. So you can understand that what are the, expectations of the students nowadays, right? So now the question arises, what is expected from 21st century teacher? It's a very small question. What is expected from 21st century teacher? So let's have one warm up exercise. I want all of you to give me your input in my Padlet. You can click the link given in your chat box, and please, I would request all of you to participate in this activity. Wait for a while. I am sharing this link in your chat box. Otherwise, you can scan from your scanner, from your mobile also, this scanner, this barcode, and you will be immediately linked to your this activity. Just wait for a while. So I have shared this link in the chat box. So you are requested to click this link and give me your input on my digital board. Your time starts now. I'll be giving you only, 3 minutes to participate in this activity. I hope the link is visible to all of you. It is visible there. Students, please respond to the link. I have sent this link in the chat box. If it is a YouTube live, then my request to the organizers, please share this link in the chat box wherever the students will feel comfortable. Okay, sir. Prashant, sir, please share this link in the YouTube like comment box.
So do we need to sign up in the Padlet? Like, No need to Padlet. No need to sign. Just click the link and you immediately will be on my tablet. Padlet, sorry. Let me check how many students they are participating. Are you able to view this Padlet? sorry, yes, sir, able to view. Yeah. Students, they are saying no. Nishant. मैंने तो वैसे शेयर करा उनके साथ. It takes time, Nishant, to get uploaded. नहीं, unless they will not click the link, they will not be able to comment. So first of all, share the link with the students, and then I have shared, this screen now. So it Yes, should be visible to it all is of them. It is visible Yes, sir, now. it is. It is visible. Yeah. So some students are writing. Yes. So I request everybody, please write on this digital board, because only then the session would be interactive. Otherwise, it will be getting bored after some time. Okay, So students, please. the question is, what is expected from 21st century teacher? So I hope everybody would write something. Yeah, please. I really appreciate. Very good, very good. Now it is fine. Once you will write, then I'll also discuss how to write it on the digital board or this Padlet. Yeah, very good, very good, very nice, very nice. Let me explain something now. How to write on the Padlet. Whenever you will, click this link, you will have my Padlet. You will have the access of my Padlet. You will find two column. Sorry, two rows. On the first, in the first row, there is space where you can write your name, and after that row, you can write your comment. So this is the way you can write your comments. In the first row, write your name, and in the second row, try to write your comment so that I will come to know who is responding. Fine. तो आपको जो ये प्लस का साइन नजर आ रहा है पैडलेट के ऊपर, यहां से भी आप अपनी पोस्ट को कर सकते हैं. या अब दीक्षा शर्मा, यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट योर नेम इन द फर्स्ट रो, देन इन द सेकंड रो, टैब को आप दबाएंगे तो वो नीचे आ जाएंगे. इन द सेकंड रो, ट्राई टू कमेंट. लाइक दीक्षा शर्मा इज राइटिंग, रक्षा इज ऑल्सो राइटिंग. Techno friendly, innovative, updated knowledge, very fine, very fine. Raksha is writing tech friendly, very good, very good. Shrishti Chaudhary is also writing, he should be a great communicator, very nice. Abhishek Singh is writing. Yeah, that's what I was trying to communicate. So first of all, write your name and then write your comments. So this is how you can use this digital board. And I'm telling you one thing. For example, Tarika, how many participants are with us during this webinar? Sir, right now we are having 258 people present. 258 people, right. So it is very difficult to accommodate 258 people in the classroom. Moreover, in the classroom, if you have the even blackboard or whiteboard, you cannot take the views of everyone and paste. अगर आप वहां से एक फॉर एग्जांपल एक स्लिप लें और उसको पेस्ट करना शुरू है, आई थिंक मुझे लगता है 1 घंटा तो उसको पेस्ट करने में चला जाएगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा टाइम जाए. एंड आफ्टर दैट, तो मेरे को लगता है इट इज वेरी डिफिकल्ट to discuss or to read everybody's views. So it can only be possible these with the help of these digital tools, right? So let me very good, very good. Who is it? Yeah, Shrishti, very nice. Jigyasa, understanding and friendly. Hitesh is writing, good speaker, better examples to explain the topic, and also positive behavior.
good understanding, right? So everybody is writing, now Tushar, Sapra, they must be able to adapt their teaching style to include different modes of learning. It's really great. It's really great. So the only purpose to incorporate these activities are that you must be acquainted with the this e-learning tools. So Padlet is one of the e-learning tool. I'll also discuss some more tools during my presentation. I have used those tools, and at the end of the presentation we will have some hands-on practice also. So let me now go to my previous screen. Okay, now I hope everybody is able to view this presentation. Yes, sir. Okay. So, from your responses, it is evident that technology is playing a vital role for making your, 21st century teacher, right? So, in order to become a good teacher, good mentor, good communicator, acquainted with all this computer's knowledge, the teacher must be, having the qualities of all these things, right? So, let me move further. Now let's have discussion, right? So what is the discussion? Considers two teachers, A and B, right? So teacher A gives an excellent lecture in the class, demonstrates solving many problems, and also gives appropriate homework to their students, right? And teacher B doesn't lecture continuously, nor does he give as much as homework. Instead, he makes his students do activities in the class that lets them practice what they have learned immediately and ensures that they get feedback on their work. So let me explain once again. I am giving you the discussion, or we I am giving you the discussion on these two topics for consider teacher A versus teacher B. So teacher A gives an excellent lecture in the class, demonstrates solving many problems, and also gives appropriate homework to their students. And teacher B doesn't lecture continuously, nor does he give as much homework. Instead, he makes his students do activities in the class and let them practice what they have learned immediately, and also focused on the feedback, right? So again, like Dr. Tarika was telling me, about 258 participants are participating during this webinar. So it is very difficult for me to get the name of each and everybody. So I want to make two groups. अगर तो classroom होता तो it is very easy for me to make two groups or three groups or four groups, but since it is a virtual classroom, तो मैं दो ग्रुप बना रहा हूं. Those people whose name starts from A to N, right, they will be in the group A, and those people whose name starts from O to Z, they will be in the group B, right? So I don't know your name, but you must be knowing well. So group A contains the people whose name starts from A to N, and group B whose name starts from O to Z. So now whenever you will write on this Padlet, in the first row, you will first write your group name, and then in the second row you will give your point, right? तो ये आपके लिए एक्टिविटी है. ग्रुप ए के बारे में आपको क्या लिखना है? राइट पॉइंट्स फॉर इन फेवर ऑफ टीचर एज मेथड. एंड ग्रुप बी के बारे में आपको क्या लिखना है? राइट पॉइंट्स फॉर favor of teacher B's method. So I'll be needing your responses. Again, I will have to share this link in your chat box, right? Please wait.
Okay, so the link is in your chat box. So I Yes. request the organizers to share this link to the people who are connected through YouTube. So please share this link so that they should be able to respond. So shared on YouTube as well. And student, please respond to this link. So students, I am again giving you just 3 minutes for this activity, and your time starts now. So I hope everybody able to view the screen discussion teacher A versus teacher B. Okay. So you only need to write A or B. I will understand that you are from which group. Okay. Very nice. Very nice. Please write, try to write, because it is just a practice session, so that after this session also you should be able to use these tools and frequently able to teach or learn during this pandemic. Okay, Meher from group A, very nice, very nice. So I'm just able to see the group name of the groups, but you are not writing anything. Please write something also. Yeah, group A, better knowledge. Okay, okay. Better knowledge of the subject, understanding. Some people are writing group B. Okay, okay. Basically, it's a discussion between teacher A and teacher B. So some of you have the, have to write the points in favor of A, or some of you, have to write the points in favor of B. It is not a declamation, it's a debate. So you are participating in the virtual debate. Okay, so Diksha is very active, and she has written so many things, because very fastly, because more than 200 people are accessing it, so it is moving very fast. Okay, explanatory, informative, very nice. Traditional method, very good. Okay, nice. Mihir is also trying to write now. Anuj has written so many things. I appreciate Anuj. Teacher A is all about कहाँ गया? Traditional faculty. No need to worry. Just write it. Already 2 minutes have gone. You have only 1 minute to write. After that, I will be discussing about. I'll summarize this discussion. Very good, very good. I really appreciate. Many people have started writing now. So it means no need to worry if you are also accessing from your mobile phones. It is very easy to write from the mobile also, because all the time you people are using mobile phone only. So earlier it was difficult to write on the mobiles, but nowadays people are feeling very comfortable with the mobiles. So I know many of you students, they are accessing this webinar from mobile phones. Kajal has written very good thing. I think method of teacher A is very appropriate. Okay, Kajal. Okay. So almost mixed reaction we have received from the students, and let me move further now. Okay, let's summarize now. Who is who is this person?
Unmute your mic and or write something in the chat box. Who is this person? Like teacher A or B, you need to write that. Yeah, yeah, yeah. I think they didn't see the movie Three Idiots. They're typing now in chat box. One response is there. Okay. Teacher A. Teacher. Teacher A. So, but how you are confirming that he is teacher A? Okay, he is teacher A. Rewrite. And who is she? Naturally, teacher B. So, what is the major difference between the teaching pedagogy or the teaching style of these two teachers? Let me explain. Actually, in the 20th century, information was at a premium and no internet was there at that time. Books were very expensive and the access to the library was very limited and so on, these kind of problems. Hence, those who had access to the information and could transmit it effectively were highly valued. जिसके पास information होती थी, ऐसा होता था कि उसको सब कुछ आता है, right? So students were mostly passive listeners, absorbing information during the lecture and during their practice later. मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं आई वाज ग्रेजुएटेड इन द ईयर 1993, तो 90 से 93 में आई डिड माय बीकॉम. तो एट दैट टाइम आल्सो टीचर ने हमें जो पढ़ा दिया तो हम कहते थे कि यार दैट्स फाइन. And he was just like a source of everything information, and he was the only person जिससे हमें क्या मिलता था, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हर चीज मिलती थी. तो पैसिव लिसनर थे हम लोग. वी वर नॉट सो इंटरेक्टिव एंड वी डिडंट हैव सो मच resources, learning resources also at that time. But now in the 21st century, information is no longer at a premium. सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि है, हमारी अचीवमेंट है, वो यही है कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर एट ए प्रीमियम. अभी तक मुझे लगता है कि सीबीएसई ने सोचा ही होता है कि पेपर पोस्टपोन करने हैं, मीडिया उसी वक्त आपको जो है, कहीं पर गूगल के ऊपर न्यूज आ रही है, कहीं किसी के ऊपर न्यूज आ रही है, तो उनको खुद असमंजस में पड़ जाते हैं कि अभी तो हमने ये आपस में बातचीत करी है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच भी गई है. तो it is no longer at a premium nowadays. So lot of accessible videos, demos, academic scripts, etc. are available on the web. If you want to learn, the only first my question is, if you want to learn, so you have the ample resources nowadays to learn. So e-learning में आज की डेट में you have the ample resources. आपको सिर्फ पहले अपने माइंड मेकअप करना है कि आपको पढ़ना है. Hence today, it is not enough for a teacher to only transmit the information effectively. पहले यही होता था. And because information can be easily accessible nowadays, so there is a shift of focus from teacher-centric to the learner-centric pedagogy. तो पहले हम क्या पढ़ाते थे, मैं क्लास में लेक्चर देके आया, मुझे लगता था मेरे से बढ़िया कोई पढ़ाता ही नहीं है, मैं सबसे बढ़िया लेक्चर देता हूं. ये मेरी एक मिसकंसेप्शन थी, मेरी मिस इंटरप्रिटेशन थी अपने आप को लेके. लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है. टीचर वो बढ़िया नहीं है जो अच्छा पढ़ाता है, टीचर वो बढ़िया है जिसको स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझते हैं, राइट? सो change in shift we are experiencing nowadays. So now the question again arises, which learning style should be followed, the style of teacher A or the style of teacher B? So both the styles have their own salient features, but now during the pandemic we are 100% bound to follow the technique of the 21st century teacher, because for the last one year we have been teaching and we have been learning through online mode only, and it is our compulsion nowadays also. So अगर आप ये सोचिए कि एक साल पहले, I'm just sharing with you my experience last year when on 20th March, or on the second week of the March, I think 14th March, when our university closed, at that time there was a big question before us that how long this will be.
Then on 23rd March when lockdown, the prime minister announced the lockdown, so उस समय ये एक बहुत बड़ा सवाल आ गया कि कैसे ये चलेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा. तो since I have been instructing or teaching through online mode for the last 8 years, so मैंने उस time में I took the initiative and I trained my faculty as well as students, और हमने वहां पर online classes start करी. So in the Himachal Pradesh, our university took the initiative, और उसके बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे देखा देखी सभी को ये चीज समझ में आ गई कि ये चीज लंबी चलेगी, और लोगों ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी. lot of students they faced many problems कि कईयों के पास नेटवर्क प्रॉब्लम था, कईयों के पास मोबाइल नहीं था, कईयों की बैटरी जो है बीच में खत्म हो जाती थी, उसको रिचार्ज करना पड़ता था. तो स्टूडेंट्स वर सम टाइम अनवॉइड आल्सो कि आप हमारे साथ कर क्या रहे हो. लेकिन वन थिंग आई एम टेलिंग यू डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको ऑनलाइन ना पढ़ाते आपके टीचर, आज तारिका मैम बैठी हैं, मोनिका मैम बैठे हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर ऐसे टीचर्स इतने एफर्ट्स ना करते आपके लिए, तो आज हमारा जो टीचिंग एजुकेशन सेक्टर है वो कितने बैकफुट पे होता. आज अभी भी वी आर trying to meet the pace of that this pandemic. But अगर जिस तरह से अब ये सेकंड जो है इसका म्यूटेंट आया है, और जिस तरह से ये बिल्कुल ड्रास्टिकली स्प्रेड हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता अभी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जल्दी खुलेंगे. सो अनलेस अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, naturally it is a big challenge before the students as well as the teaching fraternity to update themselves. अगर नहीं अपडेट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बहुत बैकफुट पे चले जाएंगे, और बैकफुट पे इतना जाएंगे उसके बाद आपको जो है स्पेस के ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So definitely we will have to follow the style of the 21st century teacher, but I'm telling you this style is a student centric approach, right? So everybody knows very well that COVID-19 pandemic has changed the education forever, right? So how COVID-19 pandemic changed this education scenario? COVID-19 has resulted in educational institutions being shut all across the world. Globally, billions of students are out of the classroom till date now, right? So as a result, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms only, as I discussed with you now. So various researchers have revealed that only online learning would be a part of the education system across the globe even post COVID-19 due to its many benefits over the classroom teaching. But there is a big challenge, as I discussed, to upgrade the teaching and student fraternity so that they should be able to cope up with this advancement in technology and also contribute in growing needs of this higher education, right? So it's a big challenge before all of us. Social, technological, and economic drivers are transforming the education system around the world. And the reasons for these changing trends are globalization of the business. Globalization had many obvious effects on education. The communication system changed the way education is delivered, as well as roles played by both teachers and students, right? So it actually enhances the ability of learners to access, assess, adopt, and apply knowledge in order to collaborate with others and make sense of the new situations. Fine. So the second one is a knowledge-based economy. Knowledge economy is the next, stage of global economic development. So ICT, education, and innovation are three pillars which form knowledge as a central capacity building for the nations. Lack of skills.
So education has a vital role to play in developing countries like India, and the play in developing countries like India, and the knowledge, skills, and attitude are playing the vital role. So lack of skills and knowledge amongst the learners demand skill-based and self-paced courses. One of the biggest changes to the educational sector in India has come from the shift in demographics over the years, right? So that's why social and demographic changes is the last but not the least, reason for this change. Demographic factors like gender issues, urban and rural, family size, poverty, etc., also shifted the learners from bricks to clicks, right? So, all these trends are causing a paradigm shift in the education sector and creating demand for e learning, or you can say online education. Fine. So let me here discuss the redefining role. So redefining role means the role of the push and pull learning. So when I would say centralized learning, just wait for a while. When I would say centralized learning, it is a push model of learning. So you can, see from here that the source of information is only one, right? And in case of full model of learning, you can have the access of various resources. You have the virtual classroom, you have different, rather many self-paced courses. You can download various teaching and learning tools. You can have the skill assessment online. You can have the online mentors. You can join various discussion forums in peer-to-peer discussion. You can have the third party data. You can have the knowledge management database. So everything can be accessible in the learner centric learning. Actually, push learning is an instructor centric approach of teaching, which is a traditional way of learning, as I was discussing in the case of teacher A. In push mode, you passively wait for the information to reach you. For example, due to some reason, I could not, join my class today, or I could not go to the university, right? So in that case, my students may maybe they can have the my alternative lecture, or sometime they will not be able to attend my lecture, right? So I was only the source of information, तो naturally at the end of the day मैं ये बोलूंगा कि उनका जो है दिन वो waste चला गया, right? So whereas pull learning allows students to tailor their learning experience to their own need based on their job roles, personal knowledge, and career interest. Fine. So nowadays, many students earn while they learn, so they can explore self-paid courses and also get the help of their peer group by participating in the discussion forums, etc. So anytime you can join self-paced courses. So self-paced courses are those courses, especially when we are talking about the MOOCs, or when we are talking about the MOOCs on the SWAYAM platform or any other Coursera or edX platform. So they all digital platforms are offering self-paced courses. The pace of the course will be decided by the learner. आपको जब टाइम मिले आप उसका वीडियो, उसका पीडीएफ फाइल, उसका ई कंटेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं. अगर आप सुबह देखना चाहते हैं सुबह देख सकते हैं, अगर आप रात को देखना चाहते हैं रात को देख सकते हैं. आप पूरे दिन में जॉब करते हैं तो जॉब कीजिए, रात को आके आप अपना पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो ऑन करके आप पढ़ सकते हैं. तो द पेस ऑफ द कोर्स विल बी डिसाइडेड बाय द learner. So this is the main difference between the push model of learning and pull model of
learning. Now, what is the reason of this, change of this shift in focus? Basically, the change of this shift in focus has happened and came into effect because it is changing from teaching to learning. We also come to know that learning how to learn, देखिए ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ और समझने वाली बात है. Learning how to learn, many people I have seen, many students, even teachers also, they don't know how to learn. सो लर्निंग हाउ टू लर्न, पढ़ने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, कैसे पढ़ा जाए, राइट? सो लर्निंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस एंड टीचर्स टू इंडिविजुअल लर्नर्स, ये एक बहुत बड़ी अप्रोच में चेंज आया. कि पहले क्या होता था कि हमारा फोकस, जैसे मैंने अभी बात करी पीछे, कि मैं कहता था कि यार मैं एक बहुत बढ़िया टीचर हूं, आई एम ए वेरी वेल एंड रिनाउंड टीचर, और मैं जो लेक्चर डिलीवर करता हूं, माय लेक्चर्स आर प्लेंटी ऑफ many plenty of my lectures are having plenty of examples, and my lectures are the best lectures. So it was the misconception in my mind, it was the misinterpretation I interpreted. But nowadays we understand that the shift of focus is from the teacher centric to the learner centric. So technology mediating the learning and self paced learning we are following. Fine. So change in delivery mode. So what is the change in delivery mode? As I said, the change in delivery mode from the bricks to clicks. अब bricks यहाँ पर क्या है? Bricks here our institution, bricks here our classroom, bricks here our university, college, and clicks is a virtual environment. So you can see here that when I am talking about the bricks, why this concept was followed by the institutions, because due to the growing student population, increase in the student tuition fee, lack of facilities and funding, at that time, sometime, I have seen many universities, especially the state government universities, they are not getting the grants from the government, and naturally जब उनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं आ रहे, ग्रांट्स नहीं आ रही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना बंद हो ही जाता है. स्पेशली उसका जो खास इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर, राइट? तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में हुआ क्या, डिलीवरी मोड चेंज किया गया या करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज एट वन क्लिक यू विल have the access of n number of universities, right? So there are many, खास करके ड्यूरिंग 2020 पैंडेमिक में, तो ये यूनिवर्सिटीज ऑलमोस्ट जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटीज डबल हो गई हैं. रादर इंडिया में भी स्टेट गवर्नमेंट्स और दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी यूजीसी ने 40 जो है यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो अलाउ कर दिया है. तो नेचुरली पहले 20% आप अपने कोर्सेज ऑफर कर सकते थे थ्रू ऑनलाइन मोड, आज की डेट में यूजीसी ने उसको भी बढ़ा के डबल कर दिया है. तो अब ये चीजें जो है अगर आप समझेंगे, देन नेचुरली आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए यू विल बी रेडी. अदरवाइज क्या होएगा, सम टाइम कई तरह की मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में भी हैं कि यार ये सिस्टम अच्छा नहीं है. हम क्या करते हैं समटाइम, in spite of the resources, in spite of the various endeavor of the government, हम अपने आप को इतने रिजिड हैं कि अपडेट करने के लिए तैयार नहीं होते. हम कहते हैं यार मेरे को तो ये चलाना ही नहीं आता, मेरे को तो ये करना ही नहीं आता. तो अगर ये टीचर्स, डॉक्टर तारिका, ये मैडम मोनिका जैसे टीचर्स अगर ये बोलते हैं कि वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द ऑनलाइन एजुकेशन, so I think it was not possible that today's event would be organized. So these things could have been possible only because of the endeavors of the teaching fraternity as well as the technical support from the institutions. So cost effective solutions these are, and autonomy of education. Autonomy of education means जैसे मैंने अभी बताया कि self paced courses हैं, you need not to आपको एक बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रहते आप. जहां भी अब जैसे आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो, तो हर
चलो अलग चीज है कि कहीं पर लॉकडाउन वगैरह भी लग चुके हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन ना लगा होता आप कहीं पर भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हो, राइट? तो घर पे हो या कहीं और बैठे हो तो यू कैन इजीली एक्सेस दिस. Now, let me explain here what is e-learning or why it becomes the need of the hour. तो बड़ी सिंपल वर्ड में पहले भी बोल चुका हूं कि ई लर्निंग इज अ मेथड ऑफ टीचिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ नेटवर्क enabled ट्रांसफर ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज which is accessible 24/7 anywhere, anytime, anyone can have the access of this learning. When I talk about the e-learning, मेरे को यहाँ पर I do remember कि जब ई बैंकिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया में after the recommendations of the Narasimha Committee report in the year 99, so we implemented the core banking solutions in the year 2003, right? तो 2003 में जब कोर बैंकिंग भी आया था तो बड़े सारे बैंकर्स ने जो है स्ट्राइक भी करी थी, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक करी थी और इसे इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे थे क्योंकि एट दैट टाइम उनको ये लगता था कि दे वर नॉट सो मच एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर नॉलेज. बट वो सिस्टम धीरे धीरे डेवलप करा. आई रियली experienced when I first time got my debit card. Then after some time, when ATM card, after some time it was converted into debit card with the rigorous efforts of the banking industry. In the year 2010 we got our first credit card. So since then we have been experienced the journey of this banking sector. So likewise, in the year 2013-14, the government of India, they started this initiative. I will be discussing in the coming slides how it came to in how it was implemented in India. So it is not just about the content and the delivery of teaching, but is a pedagogical approach that aims to be flexible, engaging, and learner centric, right? So learner centric here means one that encourages interaction, collaboration and communication. अब ये देखिए तीन वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं: interaction, collaboration and communication, right? So this interaction, collaboration and communication between teacher to teacher, between teacher to student and between student to student. तो क्या होता है कि जब आप कोई स्वयं के ऊपर या कोई अदरवाइज मूव कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यू वुड बी एबल टू एक्सेस द डिस्कशन फॉरम्स. जो उसका इंस्ट्रक्टर है सबसे पहले डिस्कशन फॉरम क्रिएट करता है और उस डिस्कशन फॉरम में क्या होता है कि एवरी डे स्टूडेंट्स रेज क्वेरीज एंड समटाइम नेचुरली टीचर्स भी उसके एनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं. दे ऑल्सो रेज क्वेरीज. लर्नर्स में ही कुछ लोग उन क्वेरीज को सॉल्व करते हैं. तो ये एक पीयर एफर्ट बन जाता है, राइट? तो डिस्कशन फोरम में जो वो इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन है वो केवल स्टूडेंट और टीचर में नहीं होता, वो तीन कैटेगरीज बन जाती हैं. टीचर और टीचर में भी हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट में भी हो सकता है और स्टूडेंट और स्टूडेंट में भी हो सकता है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ई लर्निंग एंड मूक कोर्सेज. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूं तो देयर इज ए डेफिनेटली डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड ई लर्निंग अप्रोच. So first of all, I will discuss its basis, then difference between the traditional and e-learning approach. When I talk about the classroom, naturally traditional classrooms having the physical environment, limited size. जैसे मैं अभी पैडलेट को यूज करने से पहले आपको बोल रहा था कि ये पैडलेट जो है it is just like a digital board. I have created the digital board for 258 participants and it was not possible to accommodate 258 participants in a single classroom, right? तो मुझे उसके लिए अगेन आई हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. देन सिंक्रोनस जो है वो होता है. सिंक्रोनस मींस रियल टाइम आप जो है उसको सुन पा रहे हैं. और उसके बाद ई लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या है कि अनलिमिटेड स्पेस, नेचुरली वर्चुअल एनवायरनमेंट है. तो अभी आज 258 क्या अगर 1000 भी हो जाए तो दे कैन अकोमोडेट एनीवेयर एंड एनी टाइम. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ई लर्निंग.
And when I talk about the content, so naturally in a traditional classroom I can use the PowerPoint presentation, I can have the textbooks and libraries, video presentations I can use, and collaborations I can means use. In the e-learning approach you will have multimedia or simulation, right? There are many simulation method which we can apply during our e-learning approach. We have the n number of digital libraries. Even the ministry higher education जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी कई बार उन्होंने खुद पर्सनल से भी ट्वीट करे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरीज के रिसोर्सेज आप समझ सकते हैं कि जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है, उनके जो मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद अपने ट्वीट में कई बार उन डिजिटल लाइब्रेरीज के लिंक्स को शेयर किया है। ऑन डिमांड मटेरियल है, सिंक्रोनस और अनसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से है। पर्सनलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो नेचुरली देयर इज ओनली वन लर्निंग पाथ। आप और मैं क्लास में बैठे हैं तो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, अदरवाइज ये कोई और पाथ नहीं है। बट इसमें लर्निंग पाथ और पेस डिटरमिन्ड बाय द लर्नर। मैंने आपको अपने वीडियो दे दिए, ट्यूटोरियल्स दे दिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन ऑन दैट वीडियो एनी टाइम or anywhere, right? So this is, the basically the difference between the traditional and e-learning approach. अब मैं कुछ एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, नेचुरली आई एम डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो मेरे अंडर जो है बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, बीएचएम, होटल मैनेजमेंट में जो है, एमबीए टूरिज्म में, एमबीए मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस में, पीएचडी कॉमर्स मैनेजमेंट टूरिज्म में, काफी कोर्सेज चलते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट से भी जब इंटरेक्शन करता हूं तो आई यूजुअली आस्क देम हाउ यू विल ज्वाइन द ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्स की ये जो डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन। लोगों को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स होता क्या है। तो पहले तो ये जो 4 पॉइंट्स में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसको समझिए। एन ऑनलाइन कोर्स इज नॉट सिंपली ए ट्रेडिशनल फेस टू फेस कोर्स रेप्लिकेटेड ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। हमारे दिमाग में जो एक इमेज बना हुआ है ऑनलाइन कोर्स को लेके, हमें लगता है कि ये कोर्स जो है ये ऐसा कोर्स है जो स्क्रीन के ऊपर टीचर बोल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। An online course is based on course goals and learning outcomes. Whenever you will, try to make any course, हमने भी जो है लगभग मैंने भी 70 के करीब मॉड्यूल्स लिखे हैं एज ए कंटेंट राइटर, और उसके बाद मूक इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और काफी जो है मोर देन 40 मॉड्यूल्स की एडिटिंग करी है। अभी ही कनाडा में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग जो है, उनको मैंने अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक कोर्स चलता है उनका, उसमें मैंने एज ए कंसल्टेंट उनके साथ उनको अपनी कंसल्टेंसी दी है। पिछले वीक ही वो कोर्स अभी खत्म हुआ। तो सबसे पहले जब आप एक कोर्स डेवलप करते हैं, तो कोर्स डेवलप करने से पहले हम उसके लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं। तो वो लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि मेरे कोर्स के गोल्स क्या है और उसके लर्निंग आउटकम्स क्या है, कि at the end of the course students would be able to get this kind of knowledge, और ये चीजें वो सीख के निकलेंगे ये कोर्स खत्म होने के बाद। तो ऐसा कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। द की डिफरेंस इज दैट students do not need to depend on face-to-face interaction to learn the content, and computer communication and feedback are highly important. पहले कोर्स चलते थे, ये वीडियोस कोई आज थोड़ा आ रहे हैं, ये तो बहुत पुराने से, आप कोई 10-15 साल 20 साल भी पीछे चले जाएंगे तो आपको यूट्यूब के ऊपर जो है बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं उनको। लेकिन ये आज की डेट में जब एक ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करा जाता है और उसको फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स बना के डिलीवर किया जाता है, तो उसमें feedback is very important. So every module or every lesson must have the learning outcomes, must incorporated the activities, और उन activities से के बाद आपका assessment, right? तो assessment होने के बाद लास्ट में very importantly आपकी feedback,
ठीक है, तो ये कोर्सेज ज्वाइन करने होते हैं, उनको हम ऑनलाइन कोर्सेज बोलते हैं। तो ये कुछ आपके लिए टिप्स हैं हाउ टू ज्वाइन द ऑनलाइन कोर्सेज। सो द कोर्स शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक। बड़ी बड़ी जरूरी बात है, जो कोर्स है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसिवली तैयार कर दिया गया, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स उसको एक्सेस करें ना करें, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओनली दोज कोर्सेज शुड बी ज्वाइंड विच आर स्टूडेंट सेंट्रिक। लर्निंग शुड बी कोलैबोरेटिव इन नेचर। तो कोलैबोरेटिव मैंने आपको पहले से बता दिया है कि जो है डिस्कशन फोरम्स का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो पीयर रिव्यू और पीयर टू पीयर डिस्कशंस नहीं होंगी, तब तक वो कोर्स जो है वो और फाइन नहीं हो पाता। द कोर्स शुड मैक्सिमाइज पार्टिसिपेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड शुड बी सेल्फ पेस। तो ये चीज भी मैंने पहले डिस्कस कर ली है। Courses should provide faster information, communication, collaboration and team building skills. तो नेचुरली जब आप डिस्कशन फोरम्स में एक्टिव होके पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है, उससे टीम बिल्डिंग स्किल्स डेवलप होते हैं। तो आपको जब मैंने ऐसे मेरा जो कोर्स है, और खास करके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करूंगा यहाँ पर, तो जब 2018 में फर्स्ट टाइम मूक इंट्रोड्यूस हुआ, तो एट दैट टाइम इन द मैनेजमेंट स्ट्रीम माय कोर्स गॉट द हाईएस्ट एनरोलमेंट। 3000 I think 500 something were the students enrolled in my course. So that was the highest in the management side. But after that, so many other courses developed by various renowned faculty members of the renowned universities, और उसमें I have seen more than 10,000 students also enrolled. जब 10-10 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स एक कोर्स में एनरोल हो रहे हैं, तो आप ये देखिए कि डिस्कशन फोरम जो है वो 24 आवर एक्टिव रहती है। आई हैव सीन दिस। तो बच्चे जो है नेचुरली कहीं ना कहीं बैठे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ प्रोफेशनल्स ने आपके कोर्सेज ज्वाइन करे हुए हैं, कुछ और कई लोगों ने ज्वाइन करे हुए हैं। तो वो कुछ ना कुछ डिस्कशन क्वेरीज जो है कंटिन्यूसली रेज हो रही हैं, उनके सोल्यूशन भी वही रेज हो रहे हैं। तो ये जरूर होना चाहिए। तो उसके बाद कोर्स फॉर्मेट, एक्सपेक्टेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस शुड बी क्लियर एंड कॉन्साइज, एंड एक्टिविटीज एंड असेसमेंट शुड अकाउंट फॉर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है ना। तो एक्टिविटीज मैंने जैसे आपको बताया कि एक्टिविटीज और बाद में उसकी असेसमेंट, ये भी जो है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को जो है वो इवॉल्व करते हैं, वो जो है प्रमोट करते हैं। ठीक है। नाउ थोड़ा सा एक एक्टिविटी यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू स्मॉल क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू आर एनरोल्ड इन ऑनलाइन कोर्स? आप में से कितने लोग हैं जो किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करे हुए हैं? ठीक है। आपको सिर्फ मेरे को ये इसका आंसर जो है वो देना है यस या नो में। तो अगेन आपके पास ये एक बारकोड है, आप उसको स्कैन कर लीजिए अपने फोन से, तो सीधा आप उस एक्टिविटी के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्मॉल पोलिंग मैं लूंगा आपसे, जहां से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करा हुआ है। अदरवाइज आई एम शेयरिंग दिस लिंक इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। Sir, even if they have joined earlier, then also they can answer, right? या डेफिनेटली। My chat box is not opening. Yeah, it is open now. Okay, sir. So I have shared this link. So please click this link and you will be directed to this activity. Okay, I 2 times share this link. So please share this link with the people who have, accessing this, who have been accessing this webinar through YouTube. Done, sir. There also.
So let me check how many students they are participating in this activity. Oh, that's good. Nice. Students, please Uh, click on the till link. now, till now, only 56 students they have given me their response. Okay, okay, great, great. It is very easy. It is very easy, and it seems something very good कि आप लोग व्यू भी कर रहे हैं लाइव आप अपनी पोलिंग कर रहे हैं और आप व्यू कर रहे हैं या very nice, very nice. 71 people, 73 people they have contributed, 38 said yes, 30 oh, the equal 50-50. Okay, okay. It is not a 50-50, but now very nice, very nice. It is very easy to give your online response. आपको जो मैंने लिंक दिया है जस्ट उसको क्लिक करिए और उसके बाद आपको दो ऑप्शन है उनमें से एक को बस टच करना है और उसको सबमिट कर देना है गुड so out of 93 44 said yes 49 said no so almost half of the audience nearly half of the audience they have not yet joined the any online course no issue. So today, that's why Dr. Tarika has arranged this webinar so that you must have the, ample knowledge how to join these courses and what are the benefits of joining the online courses. चलिए ठीक है anyway almost 100 participants they have given me their response right so out of this 96 participants 46 said yes they have joined the online course and 50 said they have not ever joined any online course so no issue. चलिए इसका टेक अवे मैं अभी एक दो स्लाइड्स के बाद लेता हूं पहले थोड़ा सा आई वुड अगेन लाइक टू थ्रो लाइट समथिंग ऑन द ई लर्निंग तो ई लर्निंग का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको उसके बाद मैं आपसे जो है थोड़ा टेक अवे ले लूंगा अभी के एक्टिविटी का राइट when I will be talking about the significance of e-learning तो सबसे पहला मेरा जो फर्स्ट फोकस जाता है उसका कि टीचिंग एंड लर्निंग इज वन टू वन देखिए अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं एक हूं लेकिन सभी को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही इंटरेक्शन कर रहे हैं तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ई लर्निंग मेथडोलॉजी तो इंडिविजुअल वन टू वन टीचिंग और लर्निंग है मोर इंटरेक्टिव है अभी आप देखिए कि classroom environment में depending upon the size of the class sometime it becomes difficult to interact with the students और अभी मैं आपके साथ कितनी एक्टिविटीज के थ्रू इंटरेक्ट कर पा रहा हूं तो मेरे को आपके व्यूज मिल रहे हैं और मुझे लगता है अगर हम लोग क्लास में मैं इसको आपको टीच करता तो हो सकता है कि कई शाइनेस की वजह से या किसी और वजह से आप अपना हैंड रेज करके मुझे रिप्लाई ना कर पाते तो इवन देन मैं आपसे ज्यादा रिस्पॉन्स ले पा रहा हूं learner centric hai that is this pedagogy is definitely learner centric and learner monitoring and grading system तो लर्नर मॉनिटरिंग एंड ग्रेडिंग में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको क्या चीजें प्री रिक्विजिट्स हैं तो उसमें एक्टिविटीज और असेसमेंट मैंने बताई आपको तो अभी आगे जाके मैं एलसीएम के बारे में बात करूंगा लर्नर सेंट्रिक मूक्स के बारे में बात करूंगा तो लर्नर सेंट्रिक मूक्स में भी जब हम बनाते हैं तो ये खास ख्याल रखा जाता है कि आपकी जो असेसमेंट है वो प्रॉपर हो और प्रॉपर लर्निंग बाय डूइंग इसको एलबीडी बोला जाता है
तो LBD जो है, लर्निंग बाय डूइंग, यू मस्ट हैव द एम्पल एक्टिविटीज टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर कोर्स। यहाँ पर आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट्स कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंट है, बहुत सेल्फ सर्विस है, मिक्स एंड मैच। सो व्हाट डज इट मीन मिक्स एंड मैच? The students, you have, nowadays many e-learning resources, as well as many digital platforms where you can explore n number of courses, and depending upon your requirement, you can mix and match various courses. You can download their syllabi and mix and match your requirement, then join the courses. And I'm telling you, the universities, world renowned universities like University of Cambridge, University of Oxford, University of British Columbia, University of Queens, and many renowned universities of the world nowadays, they are offering online courses, and with a very minimum cost, with a very minimal cost, you can join these courses. So it's a purely a private learning, self-paced courses, and naturally flexible also. So cost effective, I'm also discussing with you that in this virtual learning environment, it is very easy to share the content with your learners. देखिए, earlier मैं या डॉक्टर तारिका मेरे से काफी छोटे हैं, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे टाइम में इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं कहता हूं शायद कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको अभी तक नहीं पता कि पीडीएफ फाइल्स होती क्या है, ठीक है ना? तो और मैं तो अभी अगर आपसे डिस्कस करूंगा, आई couple of weeks back I met with a person who is the principal of the college. He doesn't know how to mail, उसको मेल नहीं करना आता अभी भी ऐसे जो है, और मुझे लगता है he must be around 50 years person. तो अभी भी बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको आपको देख के लगेगा कि यार ये ऐसा भी ऐसे हो सकता है। लेकिन एक अगर आप ई लर्निंग पेडागोजी को फॉलो करते हैं तो sharing of the content is very easy, लेकिन you can only share the content if you have developed it naturally. तो डेवलपिंग करनी बहुत जरूरी है, आपको डेवलप करना आना चाहिए। देन मटेरियल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता है। हाउ मटेरियल कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड? नेचुरली अगर डिजिटल लाइब्रेरीज में आप जाएंगे, यू कैन डाउनलोड एन नंबर ऑफ फाइल्स विद फ्री ऑफ कॉस्ट, बट व्हेन you want to buy any book of the foreign author, sometime it cost around 800, 1000, 3000, 2000। तो ऐसी 10 किताबें लेनी हो तो we can't afford 30,000 रुपीज। हम कभी, मुझे लगता है बचपन से जब हम क्लास बाय क्लास प्रमोट होते थे तो किताबें लेना हर एक स्टूडेंट का, मुझे लगता है वो एक प्रोजेक्ट होता था, है ना? तो यहाँ पर वो सब चीजें बिल्कुल वैनिश हो गई हैं। रिड्यूस ट्रैवल अकोमोडेशन कॉस्ट। व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए इन द ईयर टू मींस जब 2000 की जो था इरा, तब मैं एमबीए करता था, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हम लोग एमबीए करते थे। तो मैं बुक्स लेने के लिए स्पेशल डेली जाया करता था। तो कई बार मैं दरियागंज जाके अपनी पर्सनल बुक्स को लेके आया हूँ। तो नेचुरली अब डेली जाना है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी। वहां पर कई बार एक दिन रहना पड़ता था, होटल के चार्जेस भी बियर करे हैं। तो किताबें लेके, हम लोग पढ़ने के लिए किताबें लेके आते थे। तो नेचुरली ये सब चीजें जो है खत्म हो गई हैं बिल्कुल। आप जो है ये ई लर्निंग जो नेचुरली टेक्नोलॉजी है, इसने आपकी जो कॉस्ट है उसको काफी रिड्यूस किया। कंसिस्टेंट है। अब डॉक्टर मोनिका ने जब बात करी है कि इक्वालिटी की, क्वालिटी की जो है मूक्स में या स्वयं में, मैं वही बात यहाँ पर करूंगा कि सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द कंटेंट, सेम क्वालिटी ऑफ द कंटेंट फॉर ऑल, एंड सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, राइट? तो इसको जब मैं इक्विटी की बात करूंगा, यहाँ मुझे नहीं पता, यहाँ किसी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा बैठा है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई अलग से जो है टीचर ऑनलाइन का लेक्चर दे रहा है। अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसके लिए अलग से जो है लेक्चर तैयार किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के लिए इक्वल कंटेंट है, इक्वल डिलीवरी है, इक्वल क्वालिटी है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ऑनलाइन कोर्सेज। देन मीडिया रिच है। हम क्लास में जब पढ़ाते हैं, समटाइम वी डू गेट द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एंड समटाइम विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स
also, right? But जब हम डिलीवर करते हैं थ्रू ऑनलाइन, तो आई वुड से कि यू कैन गेट द हेल्प ऑफ मोर मीडिया इंस्ट्रूमेंट्स, मोर मीडिया एड्स। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है वो और ज्यादा जो है वो एंगेजिंग बन जाता है, रिपीटेबल है। रिपीटेबल, आप को पहली बार में समझ नहीं आया, आप उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इजी टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस, तो नेचुरली इजी टू मॉनिटर है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है और बड़ा प्रीसाइज है। आपको बड़े बड़े रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसे रूब्रिक के ऊपर अगर आप जाएं तो ऐसे जो है मेथड्स हैं जिससे आप स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज, उनकी असेसमेंट जो है वो बड़ी आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। Now, I am going to discuss various new frontiers of the e-learning, right? So, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि in the right hand side there are some digital platforms like Coursera, Udacity, Udemy, edX, right? And in the right hand side we have the EPG Pathshala, NPTEL, SWAYAM. So the digital platforms which have been written in the right side, these all are international platforms, right? And in the right hand side, we have the EPG Pathshala, NPTEL, and SWAYAM. These are the Indian digital platforms. Fine. So MHRD, Government of India, in the year 2013-14, they started this initiative of EPG Pathshala, right? And till date, they have developed more than 22,000 plus e-modules. So at that time, I also got the opportunity to develop the e-content, and I was the coordinator of the paper Entrepreneurship Development and Project Management. At that time, our honorable vice chancellor, they got this project as a principal investigator, and we developed 600 modules of various 15 subjects of the management. And I was the coordinator in entrepreneurship development and project management, and co-coordinator in international business operations. At that time, I also got the opportunity to give my consultancy to Central University of Himachal Pradesh, and I was also the coordinator of this project. So naturally, it was a real kind of distinctive experience, and I monitored as well as coordinated with more than 180 faculty members from different parts of the India. So it was a very good experience of the government of India, and naturally the government initiated after some years for the MOOCs. MOOCs is a different educational space, and the name of this MOOCs is Massive Open Online Course, right? So what is this massive? Massive means large enrollment numbers. So uh, as I told you that in the year 2018, when the government of India started this initiative, I also got this project, and at that time I got the enrollment of 3,500 plus. Fine. So nowadays I have seen, in some courses they got the enrollment around 10,000 or 10,000 plus. So it is very easy to handle this large number of enrollment on this digital platform, but when you want to enroll these students, मुझे लगता है 5,000 तो किसी कॉलेज की स्ट्रेंथ हो जाती है, तो वो अपने आप को नेचुरली उसके रिसोर्सेज कहाँ से कहाँ चले जाते हैं. But very importantly, or very proudly, I can say that all these courses are providing by the government of India free of cost. Open means no mandatory qualification. Any student, for example, if you are the student of some undergraduate class, so any undergraduate course you can join. Or if you want to, get the transfer of credits, अगर transfer of credits नहीं लेना तो कोई भी course आप open है join कर सकते हैं.
fully online है, and these are structured course content is an online aimed at unlimited participation and open access via the web. मैं जिस चीज के लिए मूक्स को लाइक करता हूं, बिकॉज इसकी फिलॉसफी के लिए, तो इसकी जो फिलॉसफी है दैट इज 3A, एनी टाइम एनी वन एनी वेयर। कभी ये वर्ड अब मैं यूज करता था बैंकिंग के लिए, और बैंकिंग के ऊपर मेरी रिसर्च भी है और मेरा इंटरेस्ट भी रहता है उसके ऊपर काफी। तो नेचुरली जब ऑनलाइन बैंकिंग आया, ई बैंकिंग आया, तो उसके लिए भी जो है उन्होंने यही बोला कि एनी वेयर एनी टाइम एनी वन, राइट। तो आज एजुकेशन के लिए वो वर्ड यूज हो रहे हैं, इसका मतलब आप ये देखिए कि इन द टाइम्स टू कम ये लेवल ऑफ एजुकेशन कहाँ जाएगा। आई एम टेलिंग यू वन फैक्ट दैट इवन इन द पोस्ट कोविड स्टेज ये आपका पार्ट एंड पार्सल रहने वाला है। इवन इन आर यूनिवर्सिटी विद द परमिशन ऑफ आवर मैनेजमेंट एंड ऑनरेबल वाइस चांसलर, उन्होंने भी हमारे हर स्कूल में, वी हैव 5 schools इन आर यूनिवर्सिटी, और हर स्कूल में उन्होंने 2 स्मार्ट रूम क्रिएट करने के लिए विद वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उन्होंने ऑलरेडी परमिट कर दिए हैं, क्योंकि ये सभी को समझ आ चुका है कि पोस्ट कोविड टाइम में लोगों को ये एक नया ऑल्टरनेटिव मिला है। तो पोस्ट कोविड टाइम में भी ये छूटने वाला नहीं है। तो इस कारण आपको अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए ना कि जैसे मैं पीछे भी बात कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कितनी बची है। आप मेरे को लगता है कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि मैं ग्वालियर आके आपसे प्रेस्टीज में कभी इंटरेक्शन करता, तो और कितना कॉस्टली पड़ता, मेरी आने जाने की कॉस्ट बियर करनी पड़ती इनको, है ना। तो ऐसे ही आज की डेट में पीएचडी के हम लोग वाइवास जो हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, ले भी रहे हैं एज ए इवेल्युएटर, एज एन एक्सपर्ट। मैं खुद भी ज्वाइन कर रहा हूं, और कितना इजी हो गया। और सबसे बड़ी चीज देखिए कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक खास करके जो इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, वो अपनी प्लेसमेंट्स भी ऑनलाइन करवा पा रहे हैं। अदरवाइज कंपनीज को अगर हम कैंपस में बुलाते थे तो नेचुरली काफी खर्च होता है, और आज की डेट में सारी ये चीजें ऑनलाइन चल रही है। तो इसका मतलब एनी टाइम एनी वेयर एनी वन कैन हैव द एक्सेस ऑफ दीज फैसिलिटीज। मूक्स को थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगा आपके लिए। तो मूक्स आर ओपन टू एनीवन, नो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, ये चीज आप याद रखना। हैव नो फीस फॉर स्टडी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज चलते हैं। तो मैं जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल उनकी, तो उनमें भी कई कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कईयों में कुछ फीस है जो कि बहुत मिनिमम है, बीरेबल लॉस जो है वो कॉस्ट है। एनरोलमेंट्स एट स्टार्ट एंड लर्नर्स एट द एंड। देखिए जब आप उसकी एनरोलमेंट ओपन करते हैं तो नेचुरली तब आप मेरे लिए पार्टिसिपेंट हैं, जब मेरा कोर्स कंप्लीट करके निकलेंगे यू वुड बी द लर्नर्स। Have learners who are not students of the universities. Naturally, these courses are fully online, are very lightly tutored and supported with very good study material, do offer assessments in various forms, have low study hours per week on modules, not degree programs, offer certificates of completion and then credits will be transferred, are a different educational model to higher education. ठीक है, तो ये कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं मूक्स के। तो अब हम चल पड़े हैं स्वयं की तरफ। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर बेटे आप इसको आई नीड योर अटेंशन। सो दीज आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, इनको नेशनल एनसी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बोला जाता है। स्वयं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है डिफरेंट बॉडीज जो हैं, जैसे एआईसीटी है, सीईसी है, इग्नो है, आईआईएम बेंगलोर है, एनसीईआरटी है, नाइस है, एनआईट्रिपल-टीआर है, एनपीटेल है, यूजीसी है, ये सब जो है ये कोर्सेज ऑफर करते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये सभी क्या हैं, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो आप आगे मैंने उनके डिस्क्राइब किया हुआ है कि किसको क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। एआईसीटी जो है वो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम तैयार करता है टीचिंग में, उसके बाद टेक्निकल कोर्सेज भी करता है, उसके बाद नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यूजीसी तैयार करता है, बट अभी उन्होंने सीईसी को दे दिया ये। एनपीटेल जो है वो
टेक्निकल और इंजीनियरिंग यूजी पीजी के कोर्सेज तैयार करता है। इग्नो और एनसीईआरटी जो हैं वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स और स्कूल एजुकेशन 9 to 12 के प्रोग्राम तैयार करता है। ऐसे ही नाइस जो है स्कूल एजुकेशन के ऊपर तैयार करता है। आईआईएम बेंगलोर मैनेजमेंट के प्रोग्राम तैयार करता है। एनआई ट्रिपल टी आर टीचिंग ट्रेनिंग के रिफ्रेशर कोर्सेज के प्रोग्राम तैयार करता है। और सीईसी न्यू दिल्ली जो है इट इज ए बॉडी ऑफ द यूजीसी, तो वो जो है आज की डेट में सारे नॉन टेक्निकल यूजीसी नॉन टेक्निकल यूजी पीजी कोर्सेज के ऊपर तैयार करती है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, व्हाट इज योर मूक एक्सपीरियंस? ठीक है, तो उससे थोड़ा मुझे आइडिया होगा, तो थोड़ी सी डिस्कशन करने का और अच्छा जो है आपके टाइम मिल जाएगा। आई हैव आपके लिए ये वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट मूक्स। देखिए शर्माना मत और गलत मत बताना, आपको जो इनमें से सही ऑप्शन है आप उसी के ऊपर जाएंगे। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट मूक्स, हर्ड ऑफ मूक्स बट नॉट बिलीव इन दैम। बड़े लोग, मैंने बहुत सेशंस किए हैं ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो लगभग ये मेरा 54th सेशन है। तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स भी, बहुत फैकल्टी भी देखे हैं जिनका ये ओपिनियन होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन हमने उसकी ये जो धारणा है उसको खत्म किया है। बिना लर्नर इन ए मूक अर्नड अ सर्टिफिकेट। बिना लर्नर इन ए मूक में क्या होता है कि कई लोग मूक्स ज्वाइन करते हैं बट उससे कंप्लीट नहीं करते, उसका एग्जाम नहीं देते, सर्टिफिकेट नहीं लेते, तो उसको मैं लर्नर बोलता हूँ। कोर्स कंप्लीट करते हैं, असाइनमेंट जमा कराते हैं पूरी। earned a certificate as a learner in a MOOC. So these are the four options. So मुझे आप अपना ये जो व्यू पॉइंट है वैसे ही जैसे पहले आपने मुझे दिया है, मैं आपसे लिंक शेयर कर रहा हूं, तो वो आपने मुझे देना है, ठीक है प्लीज। चैट बॉक्स जो है वर्क कर नहीं रहा मेरे एंड के ऊपर। Just one moment, sir. Prashant sir, can you please see these settings once? पार्डन? I'm just talking to my ओके ओके ओके, फाइन coordinator. फाइन फाइन। Just one moment, sir. Is it working now? जस्ट वेट। Sure. No, still it is not working. Sir, Meanwhile, students No, can no, no, scan no, it and is working now, it is working now. So I have shared this link in the chat box. So okay. please give this link to students. Okay, students, please fill this link. It is there in your chat box. So can you please one more time share those options? Yeah, please. Just wait for a while. Yes, sir. So now the link is in chat box. Students, are you able to access that link? Yes. So need not to share those options. They are visible through the link.
Yeah. So I hope it is visible to everyone. Yes, so we are. Uh, What is your MOOC experience? Mine, sir. Yes, Wh- ma'am. नहीं नहीं, I'm Okay. just asking, is this screen visible to everyone? Yes, sir. It is visible, sir. It is What visible. is your MOOC experience? So the bar titles, they are increasing. Not heard about Okay, me. okay. So 62 students, they have yet responded. So 44 said not heard about MOOC. So it's very bad. But anyway, I also requested you, please give me your real input. Fore said heard of MOOCs but not believe in them. तो तारिका, मुझे लगता है कि आपने बड़ा अच्छा इनिशिएट किया है आज. अगर ना करते तो बच्चों को पता नहीं चलना था. बिना लर्नर इन MOOCs and earned a certificate as a learner in MOOCs 5. So out of 77, most of the people, they have not heard about MOOCs. No issue, bete, no issue. Very good, very good. Please respond and give me your real feedback so that I should highlight its nitty-gritties. And at the end of the session, naturally, we will have some good takeaways. Okay, 86 people, they have responded so far. Very good, very good. So there's one comment in the chat box wherein one of the students have written, "Sir, I think students are confused about the word MOOC. Many of them have heard about Coursera, Udemy, etc." Yeah, yeah. But it is not nowadays. It is not a technical term. So when we talk about MOOCs, it means they must understand these are the massive open online courses. Okay, 92. Nice. We have more than 200 participants. So please give me your responses. Only then, unless you will not be interactive, तो आप सीख नहीं पाएंगे. Please be interactive. Give me your responses. I'm waiting for this. Students, please give your choices. Like the Mentimeter, yes. Am I Yeah. right? Yeah, it is open Yeah, yeah, yet. it's a Mentimeter. It's a Mentimeter Yeah, we use for online polling. Fine. So right. in the future also, you can use this teaching and learning tool. Yes, तो बड़ा अच्छे टूल्स हैं. अभी और भी आगे टूल्स डिस्कस करूंगा आपके साथ. right. So what is your MOOC experience? Anyways, I cannot stay much with this. So 90s, almost 100 students, they have contributed. And the majority of them, around 64 people, they said they have not heard about MOOCs. And 9 people, they said heard of MOOCs, but not believe in that. So no need to worry. 17 people said been a learner in MOOCs, and 7 people said earned a certificate as a learner in MOOCs. So I really appreciate rather a big, applause for these 7 students, because आज की डेट में अगर आप जो है सर्टिफिकेट अटेन करते हो मूक्स में, तो पहले तो चीज ये ना कि अगर आप कोई ग्रेजुएट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, एंड यू आर नियर बाय इन द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, तो एट द एंड ऑफ योर कोर्स आपको आपका रिज्यूमे भी तो अपडेट करना है. तो जब आप अपने रिज्यूमे में लिखोगे कि मैंने ये कोर्सेज जो हैं वो सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो मैं दीज आर द कोर्सेज विच आई हैव डन फ्रॉम कोर्सेरा और स्वयं और यूडेमी और यूडेस्टी और ईडेक्स, तो आप नेचुरली एक कॉन्फिडेंस आता है, प्रोफाइल बढ़ता है आपका. ठीक है, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ. So let's take away from this discussion. So I'm telling you, my dear friends, MOOCs are becoming a part of our reality now. And at the same time, I am, telling you, you are in a danger of becoming redundant if, if you have not yet
joined your MOOC course, because we need to learn to adopt and adapt MOOCs, right? And if you are still in options, not heard about MOOCs and heard of MOOCs but don't believe in it, I am sorry. It means that you are, in a big danger. So because nowadays, because we all people are accessing remotely, and during this time of pandemic, because more than 1 year, have been more than 1 year passed, and we people are still at our homes. और अभी 6 महीने जो सिचुएशन जिस तरह से बन गई है, तो मुझे लगता नहीं है अभी 6 मंथ्स और लगेंगे इसको, जो है थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने को, क्योंकि ये लास्ट ईयर से कहीं जो है सिचुएशन आगे चली गई है। तो देखिए, अगर आप को ये ऑनलाइन लर्निंग, या आपको ये ऑनलाइन कोर्सेज, ई लर्निंग, मूक्स, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद दीज टर्मिनोलॉजीज, तो आप देखिए कि बहुत मुश्किल हो सकती है आने वाले टाइम में। तो चलिए यहीं पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल? बिकॉज यू हैव गिवन मी योर इनपुट, बिकॉज आउट ऑफ 100 which I have seen, 64 people said they have not heard about MOOCs, और कुछ ने MOOCs ज्वाइन करा हुआ है और सर्टिफिकेट नहीं लिया। सिर्फ 7 ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो है कोर्स ज्वाइन भी करा और सर्टिफिकेट भी लिया। तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल? So the answers are, in front of your mobile or laptop. Number one is I prefer lectures based on textbooks. ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो टेक्स्ट बुक से पढ़ना पसंद करते हैं। देन लेक्चर्स विद एग्जाम्पल्स, देन लेक्चर्स विद डेमोज एंड वीडियोज, तो समटाइम दीज अट्रैक्ट अस। एंड लास्ट इज फैसिलिटेटिव एक्टिव लर्निंग। अब फैसिलिटेटिव एक्टिव लर्निंग वही बता पाएगा जिसने एक्चुअल में वो कोर्सेज में ज्वाइन करा है और एक फैसिलिटेटर को उसने एंजॉय करा है, राइट? सो ये मेरे 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए। व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल? लेक्चर बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर्स विद एग्जांपल्स, लेक्चर्स विद डेमोज एंड वीडियोस, फैसिलिटेटिव एक्टिव लर्निंग, राइट? अगेन आपके पास जो है विंडो ओपन है, और आई एम गिविंग यू ओनली 2 to 3 minutes. So you can log in on https://bit.ly/vk_activity3, और आप अपने मोबाइल से इसको बारकोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक आपके जो है वो चैट बॉक्स में शेयर करता हूं। सो द लिंक इज इन योर चैट बॉक्स। आप इसको जो है क्लिक करिए, और देन हम लोग देखते हैं कि क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है इसमें। Okay, students, please click on the link and give your response. I hope this window is visible to all of you. So just you have to select any of this option and submit only, right? So let me see how many people they are. Oh, that's really great. My God, already 100 people. देखिए अब this is the beauty of these webinars.
And why we generally say these webinars should be organized frequently, because यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप अपनी स्पीड देखिए, 112 students they have responded so far, and I really appreciate, and the objective of the organizers will be achieved अगर आप ऐसे ही actively participate करेंगे तो I really appreciate. So out of 120, 11 students said lectures based on textbooks, okay, and 31 students said lectures with examples, okay. 67 students, 69 rather, they said lectures with demos and videos, and 15 students, now the percentage of the students has been increased, so they said facilitative active learning. So 129 students, they have participated in this activity till now, and it is really appreciable. Fine. So let me take away from this. So it is highly appreciable that the way you participated in this activity. Fine. चलिए, ये बहुत एक अच्छी पिक्टोरियल जो है डायग्राम है, जिसमें बता रखा है कि हम कैसे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं व्हेन वी एक्सप्लोर various digital platforms. So you can see that a person wants to join MOOCs. So naturally you have n number of options nowadays. He started from this point, then naturally रोड के वो जो है दाएं मुड़ के राइट आगे जाके वो टर्न जब लेता है तो उसके पास देयर आर मेनी ऑप्शंस. सबसे पहले जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बारी आती है तो हमें कोर्सेरा का नाम दिमाग में आता है, राइट. तो उसके बाद नेचुरली यूडेस्टी, ईडेक्स और ये सब एक यूडेस्टी या यूडेमी, ये बड़े जो है इंटरनेशनल और वेल एस्टैब्लिश्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं which have been working for the last so many years. But स्वयं लास्ट में आप देख पा रहे हैं, स्वयं is also a MOOC platform which is an Indian प्लेटफॉर्म, राइट. सो पहले तो ये स्वयं होता क्या है उसके बारे में बात करूंगा, फिर आगे जाके इसकी यूनिक सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करूंगा. सो व्हाट इज स्वयं? स्वयं stands for Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds. That is the full form of Swayam, right? Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds, and it is an Indian MOOC, right? It is an Indian MOOC platform जिसको बोलते हैं Massive Open Online Courses Platform. And it is the initiative of the MHRD, Government of India, under the Digital India, covering all the advanced education, high school, and skill enhancing courses, right? So that was the purpose of establishing the Swayam. Fine. तो why Swayam? अब ये जैसे डॉक्टर तारिका अभी बात कर रहे थे कि यू पीपल माइट बी नोइंग अबाउट द कोर्सेरा, यूडेमी और ईडेक्स और यूडेसिटी और मैनी अदर इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बट व्हाई नॉट स्वयं? व्हाई नॉट स्वयं, राइट? तो मैं अगर बोलूंगा, मैं बोलूंगा व्हाई स्वयं. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर मैं उनके साथ कंपैरिजन करूंगा तो पहले जो 5 फीचर्स हैं तो ऑलमोस्ट दोनों के, या मैं दोनों के इन द सेंस कि माय प्लेटफॉर्म, माय इंडियन मूक प्लेटफॉर्म एंड दोज इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. तो इफ आई विल बी कंपेयरिंग दीज प्लेटफॉर्म्स, तो almost first 5 features are the same. Anyone, anywhere, anytime learning at no cost, equity in access to quality education, self-paced courses, and courses can be joined for enhancing knowledge and acquiring certification. So anybody who will join these courses, the purpose of joining these courses is the same, and the unique features of these 5 will be the same in all the digital platforms. But
The rest of the features will make this, digital platform SWAYAM a unique platform. What are those? Proctored exams in more than 100 plus cities in all over India with the help of pen and paper. देखिए कहीं भी ऐसे नहीं हो रहा और कहीं भी ऐसे नहीं होता। स्वयं में इंडिया 135 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको कैसे अकोमोडेट करता है कि आप देखिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से फिर भी जो है स्टेट वाइज जो है उससे भी ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं और पेन और पेपर के साथ पेपर करने की सुविधा आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है। वेरियस जो है सेंटर्स जो है आपको दिए जाते हैं जहां पर आप एनरोल होते हैं और वहां जाके आप पेन एंड पेपर के साथ प्रॉक्टेड एग्जाम देते हैं। और जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, द क्रेडिट्स विल बी ट्रांसफर बाय द यूनिवर्सिटी आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम। अब यहां पर क्या है कि मैंने जैसे बात करी कि 20% पहले था, अब बढ़ के ये 40% हो गया है कि 20% कोर्सेज कैन बी ऑफर्ड थ्रू ऑनलाइन मोड। जैसे मेरा जो कोर्स है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये पंजाब यूनिवर्सिटी इसको ऑफर कर रहा है, राइट। बट इसमें जो लोग एनरोल्ड होते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी से थ्रू आउट द इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, वो कहीं से भी एनरोल हो सकते हैं। तो मान लीजिए आप ग्वालियर से हैं, सपोज जीवाजी यूनिवर्सिटी से लोग एनरोल होते हैं, आप प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट एक ऑटोनमस बॉडी है वहां से एनरोल होते हो, तो व्हेन यू विल क्वालिफाई माय कोर्स, तो क्या करेगी पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी को या आपके कॉलेज को क्या करेगी, क्रेडिट ट्रांसफर कर देगी। यानी कि आपको वो सेम पेपर अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी में दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा उसका क्रेडिट्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक यूनिक फीचर है स्वयं का, जो स्वयं में ही है और अभी भी कहीं पर नहीं है। आपको एक चीज यहां पर और मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, हम लोग काफी ज्यादा जो है बहुत, मैं कहता हूं आप यूरोप में चले जाएं, आप जो है आप कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूएसए चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, आप हमेशा यू विल फाइंड कि इंडियन एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड है। देखिए यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत बड़े कंट्रीज में आज भी कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर इंडियंस जो है काम कर रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रेंथन्ड एजुकेशन सिस्टम है। और आज अगर इंडिया कुछ पीछे था रिसर्च में, तो आपको पता है कि रिसर्च के ऊपर कितना ज्यादा इंडिया में जो है इस टाइम प्रोग्रेस हुआ भी है और काफी होने भी वाला है। तो हम लोग नेचुरली हायर एजुकेशन को लेके, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई है और काफी स्टेट्स में वी हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आपको पता है कि वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर कितना ज्यादा फोकस किया गया है। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो एक ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है जो स्किल एनहांसमेंट में फोकस करती है, राइट। तो नेचुरली दिस स्वयं प्लेटफॉर्म इज ए कंपोजिशन ऑफ ऑल द these type of courses. So I'm very much privileged and I really feel honor when I got this course to offer through Swayam platform. I'm the course instructor of organization behavior, and fortunately for the last 3 years I have been offering this course. Even still my course is ongoing on Swayam platform, and even in the last semester also. So every semester we are getting a very good response from the students. Now I'm just telling you the one more unique feature of this Swayam learner centric pedagogy. So when we talk about this learner centric pedagogy, so in the year 2019 MHRD selected very means renowned professionals from various universities, and they gave them the training, right. And at that time they hired some
IITians from the various from IIT Bombay, IIT Madras, and many other IITs or IIM Bangalore. So they made a group of people and they trained us, right? So in order to change the technique or in order to change the methodology of offering the MOOC, now it becomes a uh, learner centric MOOCs, LCM मॉडल इसे बोला जाता है, लर्नर सेंट्रिक MOOCs. सो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा. ये राइट हैंड साइड में क्लासरूम सिनेरियो है. क्लासरूम सिनेरियो में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. मैं अब यहाँ पर आपको यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने उन चीजों को क्यों डिस्कस किया था आपसे, राइट? तो हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं, टीचर ए और टीचर बी, डिस्कशन बिटवीन टीचर ए एंड टीचर बी, what should require, what should be the prerequisites of 21st century teacher. तो उसका एक कारण था. तो यहाँ अगर मैं क्लासरूम सिनेरियो की बात करता हूँ, बोथ systems have their own unique advantages, and we nowadays we are offering through online mode, and we are giving you many kind of resources, as well as we are trying our level best to give you various tools and other things, only because of the reason that we have no other option. हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, हम जाके पढ़ा नहीं सकते हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे आपको? तो उसके लिए यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ. आपको अपने आप को तैयार करना है पढ़ने के लिए, या तो पढ़ना छोड़ दो. तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना. तो अगर पढ़ना छोड़ नहीं सकते, पढ़ना है, तो कोई ना कोई तो मोड फॉलो करेंगे ना. तो दैट इज वाई ये मोड को हमें फॉलो करना पड़ेगा. तो क्लासरूम सिनेरियो में अब मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं कि क्लासरूम सिनेरियो और लर्नर सेंट्रिक मूक्स में दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं. ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लासरूम में ही पढ़ रहे हो, रादर उससे ज्यादा रिसोर्सेज आ रहे हैं. तो क्लासरूम में जैसे अभी स्टूडेंट्स, आप में से काफी बच्चों ने इंटरेक्शन करा है, आई रियली अप्रिशिएट. तो क्लासरूम में जैसे आप बोलते हैं कि वी लाइक द लेक्चर्स एंड डेमोज, एवरीबडी लाइक, आई बीइंग अ स्टूडेंट एंड आई बीइंग अ टीचर, राइट? एवरीबडी लाइक. असाइनमेंट्स एंड एक्टिविटीज हम देते हैं क्लास में. मैं बीइंग अ टीचर और बीइंग अ स्टूडेंट असाइनमेंट्स लेते भी रहे हैं, असाइनमेंट देते भी हैं, एक्टिविटीज करवाते भी हैं, राइट? इंस्ट्रक्टर लर्नर इंटरेक्शन, लर्नर इंटरेक्शन, इंस्ट्रक्टर लर्नर इंटरेक्शन. मान लीजिए डॉक्टर तारिका टीच कर रहे हैं क्लास में, या मैडम मोनिका कर रहे हैं, तो आपसे टाइम टू टाइम ड्यूरिंग देयर लेक्चर आपसे वो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेंगे इन ऑर्डर टू एंगेज यू इन देयर लेक्चर, राइट? तो उसके बाद sometime they will give you some topic and try to give your opinion on that topic. So that is a learner interaction. Then they, after the at the end of the lecture, sometime they may give you some they will recommend you some books, and sometime lot of additional study material they will provide you with their own. और कई बार बोलेंगे कि जाओ लाइब्रेरी में चले जाओ, ये वाली बुक्स पढ़ी है, वहां इश्यू करवाओ और कल इसमें से पढ़ के आना. तो वो एडिशनल रीडिंग्स हैं. देन एग्जाम्स एंड असेसमेंट. आप अगर ये इसको फ्लिप कर लें एलसीएम मॉडल में, तो सब सारी चीजें ही हैं, तो सिर्फ नाम बदला है हमने. लर्निंग डायलॉग जो है वो है आपका, लर्निंग डायलॉग को मैं यहां पर बोलता हूं रिफ्लेक्शन स्पॉट, राइट? तो लर्निंग जो डायलॉग है या जो रिफ्लेक्शन स्पॉट है, दैट इज यूज्ड इन स्वयं फॉर engaging your students, right? तो मैं कई बार ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, मैं अगर मेरा 12 मिनट का 15 मिनट का वीडियो है, तो आफ्टर 6 मिनट और आफ्टर 7 मिनट मैंने जो कंटेंट बोला है, मैं उसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन स्पॉट डालता हूं और मैं पूछता हूं व्हाट यू हैव लर्नड राइट नाउ. तो वो मैं कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे देता हूं जिसका आंसर करने के लिए स्टूडेंट को दे आर बाउंड टू थिंक कि अभी क्या पढ़ाया इंस्ट्रक्टर ने. फिर लर्निंग बाय डूइंग और इंटीग्रेशन जो है असाइनमेंट्स है. तो लर्निंग बाय डूइंग में आपकी एक्टिविटीज हो जाती हैं और इंटीग्रेशन असाइनमेंट्स में आपकी जो है असेसमेंट हो जाती है. उसके बाद जो है रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, ठीक है. देन लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरेक्शंस, LXI से बोला जाता है. तो यहां पर आपको क्या है,
हम डिस्कशन फॉरम्स खोल देते हैं, डिस्कशन फॉरम्स में आप वहां पार्टिसिपेट करते हैं और पीयर टू पीयर अपनी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद एडिशनल जो है रिसोर्सेज आपको यहाँ दिए जाते हैं, जिसको LXT बोला जाता है, लर्निंग एक्सटेंशंस, और उसके बाद आपकी नॉलेज कंसोलिडेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्स और असेसमेंट। तो चीज वही है, सिर्फ क्या है डिफरेंस ऑफ द पेडागोजी। वो हम क्लासरूम में करते थे, ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आप, इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हमारा पर्पस, हमारा जो है वही है कि लर्नर सेंट्रिक जो है हमारी अप्रोच है, लेकिन मोड ऑफ डिलीवरी जो है सिर्फ वो चेंज हुआ है। तो दैट इज वाई स्टूडेंट्स ऑल्सो दे शुड कॉपरेट द इंस्ट्रक्टर, दे शुड कॉपरेट द टीचर्स, एंड ऑल्सो ट्राई टू अपडेट themselves, right? Only then they would be able to, get something from these digital platforms. Otherwise there is no use of investing so much hefty money on these digital platforms by the government. अब यहाँ पर मैं थोड़ा कीपिंग इन कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, सो जस्ट थोड़ा हाईलाइट ही करूंगा आपको। कुछ टीचिंग टूल्स हैं जिसको आप जो है यूज करिए। फ्री ई लर्निंग टूल्स हैं ई लर्निंग के लिए। एक तो पैडलेट मैंने ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन भी यूज किया है, तो आप इसे यूज करिए। पैडलेट के बहुत सारे फीचर्स हैं। आप अगर पैडलेट को खोलेंगे तो प्रैक्टिस टैब, इसमें 3 पैडलेट्स जो है एट ए टाइम यू विल गेट फ्री, राइट? सो उसमें आप अपनी वीडियो, आप अपना कंटेंट कुछ भी रख सकते हैं, और जिसको भी शेयर करेंगे वो रियल टाइम जो है बेसिस के ऊपर उसको एक्सेस कर सकता है। तो यू नीड नॉट टू कैरी योर पेन ड्राइव्स, राइट? तो एक क्लाउड ड्राइव का काम करता है ये पैडलेट। उसके बाद प्रेजी जो है, प्रेजी इज ए वंडरफुल सॉफ्टवेयर फॉर द इंस्ट्रक्टर्स और एज वेल एज फॉर मेकिंग द वीडियो प्रेजेंटेशंस। तो प्रेजी में और भी आप क्या करेंगे कि प्रेजी में जाएंगे जब आप, तो वहां पर काफी सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो मेरे जैसे लोगों ने बना के छोड़े हुए हैं। तो वो वीडियोस जो है वो रीयूजेबल होते हैं। तो आप उसे अगर रीयूज करोगे अपने अकॉर्डिंगली, तो आप उससे काफी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। आप उसी तरह के एनवायरनमेंट में उसकी जस्ट वीडियो को चेंज करके अपना वीडियो बना सकते हो। बीटेबल जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो बना सकते हैं। मैं अभी अगली स्लाइड में आपको अपना वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें मुझे लगता है इट विल टेक ओनली आई थिंक 3 to 4 minutes टू मेक सच वीडियो। ज्यादा नहीं तो 10 मिनट लगा लो। तो 10 मिनट में फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने एनिमेशंस के साथ बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं। कैनवा तो आजकल काफी लोग यूज करना शुरू हो गए हैं। तो मैं खुद अपने पैम्फलेट्स वगैरह जितने भी बनाता हूँ, डिजाइनर ग्राफिक्स के, इवन इन्फोग्राफिक्स के लिए आई यूज कैनवा। एडमोडो बहुत पॉपुलर नहीं है हमारे इंडिया में ये प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसे फेसबुक है, फेसबुक जो है इट इज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, लेकिन एडमोडो जो है वो टीचर्स का प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को उसका एक्सेस दे सकते हैं, जैसे गूगल क्लासरूम हम यूज करते हैं। ऐसे ही मेंटीमीटर है। मेंटीमीटर जो है इट इज यूज्ड फॉर दिस ऑनलाइन पोलिंग। और पॉपुलेट जो है मेरा बड़ा फेवरेट ये टीचिंग लर्निंग टूल है। तो पॉपुलेट से क्या होता है कि आप अपनी जैसे डायग्राम्स बनाते हैं, या आप अपने जो है, हम कई बार उसमें आई मैक से या अपनी विंडोज से समटाइम ग्राफिक्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉपुलेट ये ग्राफिक्स विद इन नो टाइम जो है वो ड्रॉ कर सकता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ही कमाल के टूल्स हैं ये लोग, ठीक है? तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल।
This video I have made for my presentations, right? So so this is the end of my today's session. Thank you so much for listening me patiently. So vkfzr at the rate of hotmail.com is my email ID. You can also catch me on LinkedIn, and this is my LinkedIn profile. At the rate of vkfzr is my Twitter handle, right? So before leaving this session, again, I would like to, send you one more link in the chat box so that I should get your feedback on my Padlet also, right? So, can you please share it to everyone, like to attendees as well? Or okay, I'll be I have sharing. shared, You should yeah. actually it is. So I'm sharing this link in the chat box. So you are requested to give me your feedback on my Padlet so that in the future, if you will give me some suggestions, I'll try to incorporate those suggestions also. So thank you so much for your active participation during the whole lecture. I think it is 1 o'clock, and for the last 2 hours you have been listening me, and really a big motivation for me also as a speaker. So thank you so much again, Dr. Tarika, Dr. Monica, for giving me this digital platforms to share my views with students. Thank you so much. So Thank you thank so you. much. If you allow, we can take couple of questions, like at least two Yeah, questions. yeah, sure, sure. Yeah, That's Monica why ma'am, I finish it. thank you Thank so you much. so much, sir. This session was actually very interactive and full of information. So we'll go ahead and take some few questions from the students. Students can raise their hands. Okay, so Anushri is the one. Anushri, you can ask your question to sir. Ma'am, we can do one thing. We can ask them to write in the chat box. Already Yeah, two, sure. three questions are there in the chat box, so we Okay, will take them first. Yeah. I'll read the questions that are there in the chat box. So learning at no cost is not with all the MOOC platforms they're asking. I had seen courses, Coursera and Udemy are offering paid courses. So a few courses are like paid one and MOOC are not offering all these free of cost courses. The students have Yeah, a doubt yeah. here. Actually, I already told you that in the SWAYAM platform we offer all the courses free of cost, and Coursera normally offer the courses free of cost. For some courses, they charge around 1 to 2,000 rupees registration, and in the Udemy, I know some of the courses are paid. But keeping in consideration today's scenario, most of the digital platforms they have already forego their registration fees. Okay, So, so like student can adding, avail. yeah, adding on to it, is it like if you want to earn a certificate, you need to pay? Otherwise, accessing the course doesn't Otherwise, have. also there are certain in the Coursera. It is my experience. I also did so many courses from the Coursera, and some of the courses were paid at that time, Okay. but they offer these courses free of cost to some of the categories. So if you are coming in those categories, even then sometime if we are not in those categories, but if you provide them the proof that you are in that category, so Mhm. the courses would be exempted. Yes, sir. Yeah. Okay, one more question is there where the student was asking that what all courses they are joining. Will it be helpful when they're joining any sort of organization or company or not? Naturally these all are skill based courses, for example, the courses like organization behavior, digital marketing,
and research methodology. So these all are the skill based courses. So when you will join these courses and get the certificates individually for these courses, and when you will write these courses in your resume, definitely it will at least the people will come to know that you are a regular, you are a constant learner. So it shows your approach of learning the things. It demonstrates that you want to learn something, you are not passive, and you are not even especially during this pandemic, when you do lot of when you do your endeavors for getting the knowledge from various digital platforms, definitely it will seek the attention of the job providers. Okay. So they have asked one more question, like time limit and duration is there for all sort of courses that are available on SWAYAM. Pardon? Time limit and the duration of the courses are there. Yeah. For every course the time limit is fixed. If I'll talk about the SWAYAM platform, there are some courses which are having the 15 weeks courses, like my courses of 15 weeks courses and 4 credit course, right? But I know there are some courses which are offering through SWAYAM, because NPTEL, AICT, then NITTR, they are offering some courses for 2 credits also. So 2 credits means they are offering for 5-week course, or some are offering 10 weeks course also. So depending upon the content of the course and approval of the course and your requirement, you can mix and match. Okay, thank you, sir. The last question that we can have actually, the student has suppose joined the course from SWAYAM, but that particular subject is not in that semester. So will he get the credit of it or not? No, no. No. If they want to join, naturally the credit will be transferred when you complete the course. But for your ongoing semester, you have to be bit choosy. Nowadays, what the institutions are doing, for example, because Central University of Jammu and many other universities, even Manipal University, they are offering my course in their ongoing semesters, right? So when naturally they will, because if we have the facility of transferring the credits, so I think it is a very big thing we are getting. So after completion of the course, the credits will be transferred by the Punjab University, and you need not to even appear in the exams of that particular semester. But अगर आपने ऑलरेडी वो सेमेस्टर निकल गया है या अभी आने वाला फिर तो चल जाएगा, निकल गया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है. Okay, so they can choose if it is in the existing semester or in the future coming semester. Yeah, definitely. Okay, okay. Okay, so I think we have done with the maximum questions. Thank you so much, sir. So great. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Thank you so for your valuable time. Like we are really grateful to have you over here. Thank you, ma'am, for organizing this wonderful webinar for these students. They have learned a lot. Okay, so I'll just share. So, Sir, Prestige Institute of Management actually presents a certificate of gratitude for Thank addressing you this so much. Thank you webinar. so much. Thank you, sir, for your valuable thoughts. And students have gained a lot about MOOC and about this SWAYAM platform. Thank you so much. Thank you so much. So, thanks again for joining us today, and take care, everyone. Uh, Thank you. So, we can end it over here. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.